नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 20 नवंबर 2022 रविवार है। अब भारत में रात के 9 बज रहे हैं। कल सुबह बाज़ार खुलेंगे 21 नवंबर सोमवार को, और हम कल बाज़ार का क्या रुख हो सकता है और रुख तो क्या पता चलता है, हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। बाज़ार ना अब एकदम बिल्कुल एक रेंज में आ गया है। जब बाज़ार रेंज में आते हैं हम उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। बाज़ार में यदि एक कोई शाश्वत और प्रिंसिपल है, वो ये है कि बाज़ार में कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद एक्सपेंशन होता है। बाकी सारे इंडिकेटर्स, टूल्स, चार्ट पैटर्न्स ठीक है नहीं है ये कहना बहुत मुश्किल है। कितनी रिलायबिलिटी है, वो भी कितने दिनों तक चलेगी, वो सब प्रश्न चिन्ह है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है वो सब समय चलता है। अब भारतीय बाजार कॉन्ट्रैक्शन में आ गए हैं। अब उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक एक्सपेंशन होना चाहिए। वो एक्सपेंशन अच्छी और कमाई करेगा ये हम सोच सकते हैं, यानी कि वो एक तरफी चाल देगा हमको। किस तरफ एक्सपेंशन बाजार का होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये तो कहना मुश्किल होता है, विशेषकर अभी, क्योंकि यहाँ टॉप पर बाजार और रेंज बना रहा है, तो दोनों ही तरफ की चाल हो सकती है। इसके बाद हम अब उस चार्ट को देखेंगे जहाँ ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन यानी कि अभी कॉन्ट्रैक्शन के संकेत हमको दिखाई पड़ते हैं। यह निफ्टी का डेली चार्ट है और ये एक 0 लैग मूविंग एवरेज है। जो दर्शक इस यूट्यूब वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं उनको ये पहचान में आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर जाकर अब ये देखिए, ये एक ट्रेडिंग रेंज बन रहा है। 18,250 का एक मैंने एक लाइन खींच ली है। देखिए ये लाइनें है ना, अंदाज से खींची जाती है, कोई इसका प्रिसीशन नहीं होता है। और ऊपर में 18,425 का रेजिस्टेंस है, यानी 250 और 425 के बीच ये देखिए 1 2 3 4 5 6 दिनों से बाजार घूम रहा है। इसको अगर आप छोड़ दें तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन है, हो सकता है कल भी ऐसा ही हो, इसी दायरे में रह जाए। ये कहना मुश्किल है कि कल क्या होगा, लेकिन जब बाजार इस रेंज से निकलेगा तो वो मेरी समझ में अच्छी मूव देगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी हो सकता है कि एक बार नीचे आके ऊपर चला जाए। ये सब चीज़ें हमको समझनी पड़ती है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि बाजार है, हमारे अनुसार चलता नहीं है। फिर भी इतने बड़े ट्रेडिंग रेंज के बाद कोई मूव आएगी, वो ट्रेडेबल होनी चाहिए, तो आप उसका ध्यान रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is 20th November 2022 Sunday. It's 9 p.m. in India now. We talk about the Nifty and we will take a general idea of what we can do in the market and what we expect the markets to do tomorrow and for the next few days. Now tomorrow the markets will open again, and Monday. My sense is that the Nifty has gone into a trading range, a reasonably well-defined trading range. Now, trading range is contraction. One of the permanent features of any liquid market is a cycle of contraction and expansion. Everything else is temporary and transient. Whether indicators work or some indicators work some of the time, some chart patterns are relevant, they are not relevant at some other time. But the only almost static feature of the market is its cycle of contraction and expansion. Therefore, we are very interested when we see a contraction taking place. That means the next leg of the market will be an expansion, which is usually a profitable opportunity. Now, we'll look at the charts and see what the contraction is, but it's very difficult to say where the expansion will take place. It's virtually impossible to say that. Sometimes we can make a guess, but we are now at a significant rally, and the expansion can be any way. And then these expansions are influenced by what the world markets are also doing. So what we know is that once the market starts moving out of this trading range, we should be latched onto it. Now we'll have a look at the charts. This is the daily chart for the Nifty. Viewers who watch this YouTube video series regularly know that this is these candles are daily candles. This is a 0 lag moving average. The 0 lag moving average is faster and more responsive than the traditional moving averages.
At the end of the chart, you can see this is a trading range that is developing. Now, a trading range can be identified in any number of ways. There is no formula for it. I've done it in my own way. It doesn't matter. The basic concept should be that the trading range is developing. I have identified 18,250 as support and 18,425 as resistance. So far as the Nifty stays inside this range, we are range bound, but sooner or later this range will break. It cannot continue indefinitely. Whichever direction happens to be the breakout direction, the Nifty should give us a tradable move in that direction. Now it's very difficult to say whether we'll come down or will go up. It is also sometimes possible that a false breakout or breakdown may take place. All these things are part of the market. We have to accept it. But the important message is watch this trading range and take a view, or rather, I'm sorry, and take a breakout or breakdown from this range. That should be a profitable trade. Thank you for watching this video. Jai Hind.